हेलो, अभी हम लोग स्लैब का रिवीजन कर रहे थे, तो हम आज फिर से स्लैब का रिवीजन करेंगे। स्लैब कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। स्लैब वन वे स्लैब हो सकता है या फिर टू वे स्लैब हो सकता है। इन वन वे स्लैब इट कैन बी सिंपली सपोर्टेड और इट कैन बी कंटिन्यूअस, और इन टू वे स्लैब इट कैन बी सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस स्लैब भी हो सकता है। तो हम लोग आज टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड का रिवीजन करेंगे। इन टू वे सिंपली सपोर्टेड बीम सबसे पहले हमको कोई भी पेपर में कभी भी कोई भी हमको डायमेंशन दिया जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि एल एक्स क्या है, एल वाई क्या है। तो हम लोग सबसे जो लॉन्गर डायमेंशन होगा उसको एल वाई लेंगे, शॉर्टर डायमेंशन को एल एक्स लेंगे। देन वी विल फाइंड एक्सपेक्ट रेशियो विच इज़ कॉल्ड एल वाई बाई एल एक्स, और उसका जो वैल्यू आएगा, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 2 देन वी विल से इट एज वन वे स्लैब, एंड इफ इट इज़ लेस दैन 2 देन इट इज़ कॉल्ड एज टू वे स्लैब। तो हमको ये पता चल गया कि अभी हमारा ये जो स्लैब है वो टू वे स्लैब है। दैट मीन्स कि जो लोड है वो बोथ शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों के ऊपर ट्रांसफ़र होने वाला है। तो इस समय क्योंकि अभी जो लोड है वो दोनों तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट बनता है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द स्लैब वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू कैलकुलेट। इसीलिए हमको IS कोड ने एक फॉर्मूला दिया है कि MU(x) इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एम डब्ल्यू अल्टीमेट इंटू एल इफेक्टिव स्क्वायर। तो ये वाला नॉट एल इफेक्टिव स्क्वायर, एल एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि हमको MU का एक उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है विच डिपेंड्स ऑन द अल्फ़ा वैल्यू, which is if we are calculating the moment in the x direction, then we have to use the alpha value alpha x provided in the IS code, and if we are calculating the bending moment in y direction, then we have to just substitute alpha y if we are calculating in y direction. So basically they have simplified our work. What we have to do is we have to calculate the ultimate weight acting on the slab, and we have to calculate the bending moment. So let's take an example कि हमको कोई भी एक डायमेंशन दे दिया गया है, तो हमने उसका एक्सपेक्ट रेशियो फाइंड किया, इट इज़ लेस दैन 2। तो हमने बोला कि दिस इज़ टू वे स्लैब। अभी हमको टू वे स्लैब डिज़ाइन करना है। तो जब हमको टू वे स्लैब डिज़ाइन करना है तो हमको इनर डायमेंशन तो उन्होंने दिया है, और लेट्स से कि वो किसी वॉल के ऊपर उन लोग देंगे कि इस वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड है, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग सिंपली सपोर्टेड। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि एल एक्स क्या है और एल वाई क्या है। तो एल एक्स क्या होता है, इनर टू इनर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाई 2, एंड एल वाई क्या होगा रिस्पेक्टिवली इनर टू इनर डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन प्लस वॉल का जो भी थिकनेस होगा उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, इनिशियली मैंने बोला था कि एल एक्स इज इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस वॉल थिकनेस, सिंस हाफ दिस साइड एंड हाफ दिस साइड विल बी रिड्यूस्ड। तो हाफ इधर और आधा, दिस इज वन वॉल, सो इसका सेंटर टू आधा हम लोग इधर का लेंगे, इसका सेंटर से आधा इसका लेंगे, तो हाफ प्लस हाफ फुल हो जाता है विड्थ ऑफ द वॉल। तो हमको एल एक्स मिल गया, एल वाई मिल गया। नाउ वी हैव टू जस्ट हमको इफेक्टिव लेंथ पता चल गया है और हमको सब कुछ पता चल गया। तो नाउ वी आर नॉट हैविंग द डेप्थ ऑफ द स्लैब, सो वी विल अज्यूम डेप्थ ऑफ द स्लैब एज अ थंब रूल एज डेप्थ ऑफ द स्लैब फॉर टू वे स्लैब इज स्पैन डिवाइडेड बाय 20, नॉट 20, 35, स्पैन डिवाइडेड बाय 35। रिमेंबर, स्पैन की जो वैल्यू लेंगे वो एल एक्स लेंगे, ऑलवेज एल एक्स लेंगे, छोटा वाला वैल्यू लेना है। देन अभी और वी रिमेंबर कि वन वे स्लैब में हमने कितना लिया था डेप्थ की वैल्यू, स्पैन डिवाइडेड बाय 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। सो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, स्पैन इज डेप्थ इज इक्वल्स टू स्पैन डिवाइडेड बाय 35। नाउ अब हमको पता चल गया कि भाई हमने डेप्थ भी डिसाइड कर लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको डेप्थ पता है, उसका आउटर सरफेस पता है, तो हम लोग फाइंड करेंगे कि भाई लोड कितना आ रहा है उसके ऊपर। तो फॉर कैलकुलेटिंग द लोड वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द ओवरऑल लोड। तो सबसे पहले तो उसका खुद का वेस्ट आ रहा होगा, उसके ऊपर हम फ्लोर के स्लैब के ऊपर कुछ
फ्लोर फिनिश करेंगे और उसके ऊपर कुछ लाइव लोड लगेगा, तो इन तीनों का हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। सो सेल्फ वेट ऑब्वियसली 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है इंटू 1 मीटर, हम लोग अज्यूम करके सॉल्व करेंगे सब कुछ, तो 1 मीटर इंटू डेप्थ, 1 मीटर इंटू डेप्थ, तो हमको क्या मिल जाएगा कि सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब पर मीटर हमको मिल जाएगा। सिमिलरली फ्लोर फिनिश का 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 1 फॉर कंसिडरिंग 1 मीटर यूनिट विड्थ ऑफ द स्लैब, so we will get kilonewton per meter value. And similarly for the live load we consider 4 kilonewton per meter square for residential, 4 kilonewton per meter square for the public building and 2 kilonewton per meter square for the residential building. Similarly we will multiply by 1 and we will get the live load value as kilonewton per meter. Then we will add all the loads and get W, which is in kilonewton per meter. Then we will multiply it by 1.5 to get the ultimate load, and after getting ultimate load we will calculate the bending moment and shear bending moment acting on the स्लैब। तो अभी हमको हमारे पास सब कुछ पता चल गया है कि हमको MU भी पता चल गया है एंड नॉट MU नहीं पता चला है, हमको W पता चल गया है, W अल्टीमेट पता चल गया है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोड एक्टिंग ऑन द स्लैब हमको उसका बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, सिंस मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि 2 वे स्लैब होता है और लोड आर ट्रांसफर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्पैन, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। सो IS कोड हैज़ गिवन द फॉर्मूला MUX इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स इंटू W ultimate into LX square, and similarly bending moment in y direction is equals to alpha y W ultimate into LX square. Remember LX is on both formula, we calculate bending moment depending on the LX span, smaller span. So एक बार जो हमको ये वाले वैल्यू के लिए हम to find the bending moment we required LX alpha x and alpha y. So calculating alpha x and alpha y is given in the IS code 456 page number 91 in table 27 for simply supported 2-way slab. So depending on the value of Ly by Lx we have to interpolate the values and get alpha x and alpha y. You can use this slope method to find the interpolation. It is very simple, just put the values and you will get the answer of alpha x and alpha y. After that we have to put the values and get the bending moment acting in both x direction and y direction. Once we will get the bending moment in both direction we have to consider the maximum bending moment and we have to check whether the depth we have provided is correct or not. So the next step come, fourth step, to check the depth. For checking the depth we have to just equate the maximum bending moment acting on the slab with the material bending moment registered by the slab, which the material we are using. Let's say we are using M25 and FP500. So depending on the grade of steel and concrete we are using, there is limiting moment registered by it. So we have already calculated it for FE 250, FE 415, FE 500. The respective M limiting values are 0.148 FCK BD square, 0.138 FCK BD square, 0.133 FCK BD square. And similarly we will equate it and we will get here, remember here B is equals to 1000 since we are considering 1 meter span of the slab, and we will get D value. After getting D value we have to check whether the required, this calculated D value is less than provided D value. If it is less than provided D value, sorry, we have not calculated initially the effective depth. So for effective depth which we are comparing is total depth minus cover, which is 20 mm, minus the bar we are considering, let's say 10 mm divided by 2. So we will get the D value. Once we will get the D value, then we have to compare it with the
calculated value. If it is less, then we can say that our slab is okay. So now we have checked about our depth also, कि yes, the provided depth is able to resist the bending moment. Now once we know the bending moment, so we are having bending moment and all the dimensions of the slab. Now we have to provide the reinforcement to resist that bending moment. So for resisting the bending moment, we provide steel bars, and now we have to calculate the area of steel bar. For calculating the area of steel bar, we use one long formula which I have already discussed in the previous video. So AST is equals to 0.5 FCK divided by FY in bracket 1 minus in 1 minus in bracket under root of 1 minus 4.6 mu divided by FCK b small b into d square bracket close into b into d. So we have to put here all the values. Remember, b is equals to 1000, and after putting all this value, we will get AST. So since we are having two moment in x direction and y direction, we will put the two values of m, and we will get the respective AST in both the direction. After getting AST in both direction, we have to define one bar. We have to assume one bar, let's say 10 mm or 12 mm, let's say 16 mm we can take. So depending on that, we will have to decide the spacing. For calculating spacing, we know the area of one bar divided by the total bar total AST we have into 1000. So we will get the spacing. So in the same way, since we have done in the initial, we have to check the spacing which we have provided is should be in for the main reinforcement. The spacing the calculated spacing should be less than 3D and 450 mm. Whichever is less, we consider it, and we go in the same way. So once we have calculated the spacing in x direction and y direction, we have almost done everything. But since our motto was to design the two-way slab, that means we have to design the both directions area of steel and spacing which we have to provide in making it. So till now we have calculated everything, but we have to consider one more thing in two-way simply supported beam. Since there is a moment torsion coming at each corners, so we have to provide extra reinforcement in the kind of mesh bars. So we provide a square mesh at the corners of each corner of the slab. For providing the mesh, we assume the area of steel to be provided is at each corner is 3/4 of the maximum AST at the center of the span. Center of the span may be in x direction and y direction, and depending on the this formula, we have to calculate the number of bar required for that, and we have to distribute this number of bars in a square form, lx by 5 square dimension. We have to distribute and make one mesh, and we have to provide in each corner of the two-way slab. Thus we get the overall calculation. So if we consider this is two-way slab, so we have designed the x direction bar and y direction bar, its spacing. Also, while providing the bars, we have to make sure it is alternate bar bent up, since due to friction, a fixity is created at the edge of the slab, and there is some of the negative bending moments coming, hogging bending moment coming at the supports. So to counter it, we have to provide alternate bar bent up, and
thus it is completed. At the end we have to draw one diagram showing all the alternate bar bent up in both the direction. Also the mesh which we have provided at each corners, make sure it is a square having lx by 5, and the bar which we have provided for the mesh is equal to the dia of the main reinforcement bar. And yes, now thus we completed the overall design of the two-way slab. Thank you so much. Be tuned for the next video. Thank you.